Hello students, by use of triple integral, we find volume of cone in Cartesian coordinates, cylindrical and spherical coordinates. Today we will start volume of cone in cylindrical coordinates. Okay. Beta, volume of cone in cylindrical coordinates. This one is y-axis, x-axis and z-axis. In spherical coordinate, this one is phi. Okay. This one is okay r. So we draw a cone. We find volume, r is radius, okay, and h is height of cone. Okay, so volume in cylindrical coordinate, we have r, dr, dz, d phi. Okay, we find limit, beta phi. Okay, so phi is limit beta 0 to 2 pi. Okay. Z. At this one z 0. At this position कितनी है beta height h. So 0 to h. We find limit of r. You see beta r depend upon. Let this point is x, y, z. Okay. And this one is 0, 0, z. Let Q point. This one is AB, this one is 0. O. Okay. You see beta Z जो R है beta this one. ठीक है. Then depend upon let this one is R. ठीक है. लेंथ मैंने R कंसीडर कर ली बेटा. Depend upon किस दे डिपेंड कर रहा है बेटा Z पे. Okay. Depend upon Z. So triangle OPQ, triangle OPQ. Then this one is Z. Let this angle is alpha. देखो बेटा this one OPQ. This angle is alpha R and this one is Z. So tan alpha equal to R upon Z. Okay. Triangle OAB. Beta R की कैसी में radius of cone. So tan alpha equal to A upon H. So R upon Z, A upon H. So R equal to A Z upon H. So we find limit R 0 and this one depend upon Z. So A Z upon H. Okay. Repeat beta. We find volume R in cylindrical coordinate R, dr, dz, d phi. Okay. So beta first phi 0 to 2 pi limit beta. And H limit 0 to beta Z the limit 0 to H and R. बेटा दिस वन रेडियस में इस डिस्क की कट रही बेटा जैसा रेडियस की है बेटा कट द डिस्क हुज रेडियस इज आर डिपेंड अपॉन किस पे डिपेंड कर रही है बेटा जेड पे. सो ए जेड अपॉन एच. सो वी सॉल्व दिस 0 to 2 pi 0 to h then r square by 2 0 to a z upon h dz d phi. Okay. 0 to 2 pi. Okay. 0 to h. A square z square upon 2h square. dz d phi. A square upon 2h square. 0 to 2 pi. 0 to h. Z square dz d phi. So we have a square upon 2h square into beta d phi limit 2 pi
beta is the z square, z cube by 3, put h cube by 3. This 1 by 3 pi a square h. This one is a volume of cone. In second, we find volume of cone in spherical coordinates. In spherical coordinates. In spherical coordinates. Okay. In spherical coordinates, you know better. This one is y axis, this one is x axis, and this one is z axis. And this is phi, and this one is r, makes angle theta, and this. Okay. Let r is radius and h is height of cone. Okay, this one is h. In spherical coordinates, beta. Okay, then beta, we find volume. So volume of cone, triple integration, r square sine theta. Okay, r square sine theta dr d theta d phi. You know phi 0 to 2 pi. Okay, we find theta. Okay, then we find the value of theta. This one is A and this one is H. Triangle OAB. Triangle OAB. We have tan theta equal to A upon H. Theta equal to tan inverse A upon H. So then limit of theta beta 0 to tan inverse A upon H. Volume equal to triple integration r square sine theta dr d theta d phi, limit of phi 0 to 2 pi. Okay, and theta rotate beta देखो this in clockwise, this in negative rotate down. ठीक है, so 0 to कितना आ रहा है बेटा theta tan inverse A upon H. Okay, then R is depend upon theta. देखो बेटा, if theta this one, R this change in R, so R depend upon theta. So we find R in the form of theta beta. So beta we have, देखो बेटा, value. This one is A, this one is H, this one is R. Then cos theta. Cos theta. Cos theta equal to, this one is base H upon R, यही triangle दे विच बेटा. So R equal to H secant theta. So R depend upon theta. So 0 to H secant theta. Okay. 0 to 2 pi, 0 to tan inverse A upon H, R square, R cube by 3, limit 0 to H, secant theta, sine theta, d phi. Okay, 0 to 2 pi, 0 to tan inverse A upon H, 1 by 3, H cube, secant cube theta, sine theta, d phi. So 1 by 3, 0 to 2 pi, H cube. Okay, secant
secant square theta and 1 upon cos, one term beta secant square like secant theta 1 upon cos theta tan theta. Okay, tan theta का डेरिवेटिव बेटा secant square theta. So tan square theta upon 2 0 to tan inverse a upon h phi d phi. Okay, so we have h cube by 3 0 6. Okay, 0 to 2 pi beta tan inverse a upon h square d phi. Okay, beta h cube by 6 into a square upon h square. Okay beta, a square upon h square 0 to 2 pi. So we have 2 pi. Cancel this 1 by 3 pi a square h. So beta एक ये आगे बेटा volume of cone in spherical coordinates. Beta next in Cartesian coordinates. Okay, volume of cone in Cartesian coordinates. Beta volume equal to dx dy dz. Okay, dx dy dz. Draw a cone. This one. Okay, height h, radius a. Height h, radius a. Okay. Triangle OAB. Triangle OAB. This angle is let alpha. Tan alpha a upon h. Okay. हाइट कितनी है बेटा h. सो z की लिमिट कितनी आ गई बेटा 0 to dx dy dz 0 to h. tan 0 to h बेटा हाइट h. ओके, दैट फाइनल हो गया बेटा. देन दिस पॉइंट इज यू नो p x y z and on z axis this point is q 0 0 z. We consider pq. PQ किस इक्वल आ गया बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. सो ट्रायंगल OPQ बेटा ट्रायंगल OPQ tan अल्फा इक्वल टू PQ अपॉन दिस वन इज h, दिस वन इज z. हाइट कितनी है बेटा z. ओके, सो PQ अपॉन z. ओके बेटा, tan alpha is equal to PQ upon Z बेटा. क्लियर है बेटा. हाइट कितनी सी बेटा h. सो दिस वन इज PQ perpendicular and this one is Z. Okay, so equate both. tan alpha so a PQ किस इक्वल है बेटा रूट x square plus y square upon z equal to a upon h. Okay, so x square plus y square a square z square upon h square. Okay, x square plus y square equal to a square z square upon h square. So we find
this one. So beta a square z square upon h square. Okay. Then x square. Beta find at z the limit आ गई y x and y. X square a square z square upon h square minus y square. And we find limit of y, then x0 y square equal to a square z square upon h square. Y equal to plus minus a z upon h. से इसमें मैंने बेटा y1 कंसीडर कर लिया. सो y की लिमिट की है बेटा माइनस y1 टू y1. ओके, y1 इक्वल टू a z upon h. देन x स्क्वायर y1 स्क्वायर माइनस y स्क्वायर. सो x इक्वल टू प्लस माइनस रूट y1 स्क्वायर माइनस कंसीडर x1 प्लस माइनस x1. क्लियर है बेटा? देखो बेटा y x की लिमिट फाइंड कर ली y की लिमिट ਨੂੰ ਕੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਿਆ बेटा प्लस माइनस y. पुट इन दिस वन, वी फाइंड दिस माइनस x1 टू x1. ओके, फर्स्ट सोल्व बेटा किस ਨੂੰ सोल्व करांगे dx. सो वी हैव टू बेटा 1x पुट करांगे लिमिट बेटा dy dz. सो टू 0 टू h माइनस y1 टू y1. x1 की वैल्यू किसे इक्वल है बेटा रूट y1 स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dy dz. देन वी फाइंड सोल्व दिस y by 2 रूट y1 स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स y अपॉन y1. लिमिट की है बेटा माइनस y1 टू y1 dz. ओके, देन 2 0 टू h पुट द लिमिट y1 0 प्लस y1 स्क्वायर बाय 2. बेटा 2 कैंसिल कर दो बेटा. सो y1 स्क्वायर साइन इनवर्स. ओके, फर्स्ट y1 1 माइनस again minus y1 0 minus y1 square sin inverse minus 1 dz. Okay, so we have beta 0 to h pi by 2 2y1 square into pi by 2. Okay, dz pi beta y1 square a square z square upon h square dz. So pi a square upon h square z cube by 3 limit 0 to h. So h cube by 3 cancel. So we have 1 by 3 pi r a square h. So we find volume of cone by using triple integral in Cartesian coordinates, cylindrical and spherical coordinates. Thank you very much. But in my next video we find volume of cylinder. Thank you very much.